Hello friends, in today's class we will look at one more example of computer skill test which is asked in ASO, BSSO and other competitive exams. हम आज MS Access का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी कंप्यूटर स्किल बेस्ड टेस्ट में आती है. सो देखिए. So let's open MS Access. Here start with a blank database. If a database name is given here in this question, it is asking to give a database name as report card. तो report card database का नाम होना चाहिए. और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है database का फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या है. So that is ACCDB. Right. So let's give it report card. Okay. So database name you are giving report card and then let's create it. So now as I mentioned earlier, you go to the design view and create the table. So the table that you need to create, is there any name that is given here? So there is no name given, so let's give it the name as student marks. Say student underscore marks. Okay. So now automatically a primary key is created for you for that table with ID. We will delete that later. Let's complete what is there. So student name, physics, chemistry, date of birth. So if you see, it is asking to create the table with the following fields. The first field is s underscore name. तो पहले आपको ये टेबल में डेटाबेस में एक टेबल बनाने को बोल रहा है जिसमें फील्ड्स रहेंगे s अंडरस्कोर नेम. उसका डेटा टाइप रहेगा टेक्स्ट. फिजिक्स एक फील्ड है जिसका डेटा टाइप रहेगा नंबर. केमिस्ट्री इज़ ए फील्ड जहाँ पे नंबर रहेगा. फिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा डेट डेटा टाइप. ओके. सो लेट्स डू दैट. पहले तो फील्ड में आइए. फील्ड का नेम में आप s अंडरस्कोर नेम लिखिए. डेटा टाइप में आपका टेक्स्ट है तो इसमें शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है. क्योंकि स्टूडेंट का नेम बड़ा हो सकता है, हम इसमें लॉन्ग टेक्स्ट डालते हैं. तो फिर आगे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स, क्योंकि नंबर है आप नंबर ले लीजिए डेटा टाइप में. ओके. फिर आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ. सो DOB. तो DOB वो एक डेट ले रहा है, राइट. तो आप डेट ले सकते हैं. ओके. और यहाँ पे आप इसमें फॉर्मेट है तो आप फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हो किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए. सपोज हमारा फॉर्मेट है, हम ये फॉर्मेट हम बाद में भी सेट कर सकते हैं. फॉर नाउ लेट अस जस्ट स्टिक टू डेट टाइम फॉर्मेट. ठीक है. अब हम इसको यदि डेटा सेट व्यू के चेंज में आएंगे तो हम इस टेबल को सेव कर रहे हैं. देखिए आपके अभी स्टूडेंट मार्क्स टेबल बन गई और इसमें कॉलम्स हैं स्ट्रीट नेम, स्टूडेंट नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेट ऑफ बर्थ. ओके. फिर आपको इसमें डेटा एंटर करना है. एंसर द फॉलोइंग डेटा A, B, 51, 67 डेट ऑफ बर्थ. तो आप दो तरीके से एंटर कर सकते हैं. एक आप यहाँ पे मार्क्स लिखिए डायरेक्ट. एक आप यहाँ पे मार्क्स लिखिए AAB 51, 67, राइट. AAB 51, 67. और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वॉट एवर फॉर्मेट इज देयर. सो इट्स 25/05/1988. सो इट्स
DD MM YYY. Okay, so you just pick up any date. So now you see here the format, it is there is month comes first, then date, then year. Okay, so we will stick to that. Okay, so let's try one thing. We'll go to design view, and in this date format, let's see if we can change this format. So depending on your locale, that format is coming, so we will come back to that. Okay, so डेटा शीट व्यू को चलिए, यहाँ पे आप अपना जो डेट है उसको दीजिए. सो आपका डेट क्या है, पहले मंथ आ रहा है तो 05/25/1988. सो 05/25/1988. Okay, so this way you have entered one record. The other way of easily, if you have more data, if you find this conversion, then you can do one thing. You select this table, you go to create, and you just create a form out of it. So once you have the form, you see it will you get a content from which you can easily enter your data. So let's go to the next record. So here you give the name BPG62. Let's enter. It's in design view, so we need to go to the form view. BBG how much mark, 6259, 6259. Date of birth is 12/12/78. Here it won't make a difference. Okay, so now go there, CCH CCH 73 66 73 66 66 1977. Here also we can enter directly. Okay, so now you have it. Now let's click on the save button. Okay, so your form is saved. Now if you click on your student, and it will, if you refresh, it will come back there. Okay, so now you have the table where okay, so let's close this and then open it again. So somehow it is not getting refreshed. I will look into that. You see, when you open, you have the data in your table entered. So now the data is inserted. Now it is asking us to find the sum of physics and chemistry marks by using MS Access feature. Okay, and so how do you find the sum of two columns? So what it is asking us to do is to find the sum of this and this here. So if that was something we could, so what it is asking us to do, it is asking us to do like 51 plus 67, right? But so how to do that? So you click on this field. Hang on, let me remove this and delete it. So click to add. Now you see there is something called a calculated field here. So you go to calculated field and click on, say, number. Okay, now it is asking
you enter an expression to calculate the value of the calculated column. So in that you need to give the field names that you want to add. So here we want to add the number of physics, so physics, then plus, then you want to add the value of chemistry. Okay, so let us do that. So now you see automatically these two values are getting added. So let's call it sum of marks or something like that. Okay, so now you have completed the exercise of the item 2. What you did was you added a new field, you went there and you opted for a calculated field, you gave the expression of physics and chemistry. तो आपने क्या किया, आपने पहले क्लिक कॉलम पे ऐड गए, कैलकुलेटेड फील्ड पे गए, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, नंबर को आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने जिन कॉलम्स को ऐड करके आपको वो नंबर डिराइव करना है वो आपको आपने सिलेक्ट किया। इसको कैसे करना है, जो भी कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए तो वो ऐड हो जाएगी, फिर उसमें प्लस साइन दीजिए, उसके बाद आप दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए, फिर ओके कीजिए। सो दैट विल क्रिएट द कैलकुलेटेड फील्ड फॉर यू। सो नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो डन। ओके, फिर देन यू सेव इट। ओके, and then let's go to the third one, sort the above table with respect to the field s underscore name in descending order. So table को sort करना है using the name s underscore name. So you create any you select any a field and then you need to sort it. Okay, so this is already sorted and so it's not showing that. Hang on, it's in the numbers. So if you select any other columns, you see sort smallest to largest, so you can do that. Ours is already sorted, it's ABC already. Then you it's sort in the name descending order of the field s underscore name. Okay, hang on, so let's go to the data sheet view, and if I select here, I don't know why it is not coming. Okay, I will check on that why it is not coming. Let me add another text here. See, short text A B, let's see, and then can I sort it? Yeah, for here it is coming. Due to some reason here it is not coming. One. Okay, let me delete this. Okay, and let me insert a new column. Insert field, say A B B C C. And then if I go here, I can sort from this to descending order. Okay, so let's see if I change the name to s underscore name, then it is still working. Oh, there was some issue there. So you sorted by Z to A. So now you have your third item done, where you have sorted the table in the descending order. Due to some reason, if you see that this option is not coming, it may take time to figure it out. So you can easily delete that field and you can
add that field. सपोज़ किसी वजह से आपके एग्ज़ाम टाइम में बिकॉज योर शॉर्ट टर्म टाइम यू सी दैट कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आप जैसे मैंने अभी ये ट्राई किया, आप वैसे भी कर सकते हैं, एक उस फील्ड को डिलीट करके फिर से एक नया फील्ड देख सकते हैं, पर उससे पहले आप देख लीजिए एक नया फील्ड ऐड करके कि वो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि नहीं. ओके, सो लेट्स रिमूव दीज अनवांटेड फील्ड्स. अभी हमारा ये डीप वाला भी हो गया. फिर बोल रहा है चेंज द कंटेंट ऑफ द फील्ड DOB टू फ्रॉम डेट टू डेट लॉन्ग फॉर्मेट. ये जो डेट ऑफ बर्थ को बोल रहा है इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए. तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं. इफ़ यू डोंट हैव ऑप्शंस हियर देन यू गो टू द डिज़ाइन व्यू एंड यहाँ पे डेट टाइम पे जो ऑप्शंस हैं, ओके, तो यहाँ पे गो टू फॉर्मेट, व्हाट इट इज इन डेट लॉन्ग फॉर्मेट. ओके, तो यहाँ पे एक लॉन्ग डेट है, ठीक है, तो आप लॉन्ग डेट को वो बोल रहा है चूज़ करने के लिए. तो हमने यहाँ पे लॉन्ग डेट सपोज डाल दिया. ओके, सो नाउ the date time the format is long date. So now let us go to the data sheet view. अभी देखिए, so you have changed the format of the date column to a long format view. So okay, so आज के लिए इतना ही. You have a great day. Thank you.